पार्टनर्स के बीच में एक इंजॉयबल एक्टिव सेक्सुअल लाइफ बहुत जरूरी होता है और इसका कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स भी रहता है. It improves your physical, psychological and relationship health. But to have an enjoyable sex, you need to be comfortable with it. Today, I, Dr. Sudesh Nane, will talk on tips for comfortable sex. पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी सेक्स क्यों अनकंफर्टेबल होता है. 1. Vaginal dryness, commonest cause. अगर वेजाइना अच्छे तरह से लुब्रिकेटेड ना हो तो सेक्स कैन बी पेनफुल फॉर बोथ द पार्टनर्स. इसका कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल अपसेट्स या इन्फेक्शंस या फिजिकल या मेंटल तैयारी ना होना या नॉट हैविंग इनफ ऑफ फोरप्ले. Please refer to my video on vaginal dryness for more information on this. 2. Infections. अगर वेजाइना में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वेजाइना काफी सोर या रॉ हो सकता है, especially at the entrance. This can lead to a significant discomfort, especially during penetration. 3. Painful sex. अगर सेक्स करने के टाइम पे आपको डीप पेन होता है तो इसका कई कारण हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स, इन्फ्लेमेशन etc. 4. Psychological issues. A comfortable sex will always need a happy and a relaxed mind. Anger, fear, guilt, unhappiness, fights, ये सब एक negative impact करता है on your happy hormones, and the happy hormones are very much needed for a comfortable and enjoyable sex. 5. Menopause, which can thin the tissues and cause pain during sex. 6. Pregnancy. Certain women, a few women do enjoy sex during pregnancy, but for most of the women, sex is uncomfortable during the pregnancy because of the growing bulge and the growing weight. Breastfeeding के वजह से भी vaginal dryness हो सकता है और uncomfortable sex हो सकता है, but ये temporary है. 7. Certain positions during sex can make sex very uncomfortable or painful. So, what are the solutions and tips for comfortable sex? 1. Treat any underlying conditions जैसे infection, inflammation, endometriosis. अगर सेक्स कंटिन्यूसली आपके लिए पेनफुल होता है तो प्लीज आपके गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लें और इसका डायग्नोज करें कि किस वजह से हो रहा है और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें. 2. अगर वेजाइना बहुत ड्राई लगता है तो प्लीज यूज वेजाइनल लुब्रिकेंट्स. Home based lubricants like peanut oil or avocado oil or even coconut oil is good. Or commercially available water-based or oil-based lubricants can also be used. Menopause के बाद अगर सेक्स बहुत uncomfortable हो जाता है तो you can start using hormonal treatment or hormonal replacement therapy, but always with your doctor's advice. Try new positions. एक position में अगर सेक्स ज्यादा uncomfortable हो तो please try new positions. This will not only make sex comfortable but also will maintain the eagerness and the quirkiness in your sexual life. 5. Indulge in enough foreplay. Penetrative and enjoyable penetrative sex के लिए both the partners should be ready equally together and in the same intensity. 6. Last but not the least, communicate freely with your partner. सेक्स के बारे में आपस में बात करें, आपकी नापसंद और पसंद एक दूसरे को बताइए. Shed all inhibitions and talk about sex freely. Do not discard sex as something which is dirty, prohibited, mundane routine, or something which is secretive. Though sexual intercourse is the beginning and the core origin of the life, please do not consider it as only for reproduction. Imagine it to be or consider it to be a very beautiful act and enjoy it completely, happily, without any inhibitions. Do not hesitate to write to me at drsudeshnacares@gmail.com. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.